हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वेंडर सर्विस अग्रीमेंट। सो बेसिकली जितनी भी इन हाउस लीगल टीम होती हैं उनमें ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अग्रीमेंट होता है। तो इफ़ यू आर सिटिंग फॉर एन इंटरव्यू फॉर एन इन हाउस टीम, सो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। तो पहले लाइक आई एम रीडिंग विथ यू ओनली, so I have no idea what is this, but let's read together. So vendor service agreement is a legally binding contract between the client and the external service provider. Okay, it defines the scope of work, payment terms, performance standard and legal protection. So who is the vendor? Okay, the vendor is the one who sell their product. ठीक है, let's read some article. हाँ, इंटरस्लाइस का पढ़ते हैं, वेंडर अग्रीमेंट ड्राफ्टिंग सर्विस इन इंडिया। ओके, लेट्स रीड दिस। हाँ, आई होप इट इज़ विजिबल टू यू। ओके, सो व्हाट इज़ वेंडर अग्रीमेंट? सो it is an agreement which define the provision and condition of the work to be performed by the vendor. Vendor is typically used in describing the entity that has paid for the goods that are provided. The basic point include date, time and location where service must be provided. So basically बोल रहा है कि वेंडर अग्रीमेंट एक ऐसा अग्रीमेंट होता है जिसके अंदर प्रोविजंस और कंडीशन ऑफ वर्क, क्या परफॉर्म किया जाएगा वेंडर के द्वारा, वो लिखा हुआ होता है। वेंडर क्या करेगा, वेंडर का प्रोविज़न और कंडीशन ऑफ वर्क लिखा रहता है। तो वेंडर को यहाँ पे डिफाइन किया जाता है एक ऐसा बंदा जिसने पेड किया हो, दैट हैज़ पेड फॉर द गुड दैट आर प्रोवाइडेड। तो बेसिकली वो एक ऐसा बंदा है जिसको पैसा दिया जा रहा है, जो गुड वो प्रोवाइड कर रहा है उसके लिए। ठीक है, इसमें डेट, कौन से डेट को, कौन से टाइम को और किस लोकेशन में डिलीवर करना है, ये सब कुछ प्रोवाइडेड रहता है इस अग्रीमेंट में। सो इफ़ यू आर अ सेलर और अ वेंडर, ओके, सो वेंडर इज कौन होता है? जो सेल कर रहा होता है अपने सामान को, जिसको पैसा मिलता है उस गुड्स का। तो इफ़ यू आर अ सेलर और अ वेंडर, देन देयर मस्ट बी अ केसेस वेयर यू माइट रिक्वायर अ वेंडर अग्रीमेंट डॉक्यूमेंट। तो अगर आप कोई सामान बेच रहे हो तो आपको वेंडर अग्रीमेंट डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगा। It serves as a composed insurance between the parties with mutual consent. तो ये agreement क्या होता है? बेसिकली वेंडर और बायर दोनों साथ में उनका म्यूचुअल कंसेंट बताता है। ठीक है, सो इफ़ यू हैव एन अग्रीमेंट विथ योर कस्टमर और प्रोवाइडर व्हेन यू आर इनटू अ कस्टमर सप्लायर बिजनेस, वेंडर अग्रीमेंट बेसिकली बनता है when या तो your business is small and you have couple of product or service for the sale. So vendor agreement जनरली वही लोग बनाते हैं जब आपका बिजनेस बहुत छोटा होता है और आपके पास बहुत सारे प्रोडक्ट और सर्विसेज होते हैं जो आप देते हो। अब एडवांटेज क्या है वेंडर अग्रीमेंट का? सो फर्स्ट, इफ़िशियंसी बढ़ाता है। इफ़िशियंसी कैसे बढ़ाता है? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप वेंडर अग्रीमेंट में एंटर किए हो तो यू नो कि मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से कस्टमर ए, मुझे कस्टमर ए को किस टाइम पे, किस लोकेशन पे, किस डेट पे डिलीवर करना है। ओके, और तो ऐसे से इफ़ यू हैव एक्स नंबर ऑफ कस्टमर तो आपकी इफ़िशियंसी बढ़ जाती है। यू आर नॉट लाइक ऐसा नहीं होता है कि आप मतलब किसी और कस्टमर को उस डेट पे दे देते हो, या किसी और को वो प्रोडक्ट देना था आप किसी और को कम क्वांटिटी में प्रोडक्ट दे देते हो। तो ये चीज़ें एक इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है कि इससे इफ़िशियंसी बढ़ता है। दूसरा, ये रिस्क को आइडेंटिफाई करता है और मैनेज करता है, रिस्क ऑफ वेंडर। तो वेंडर का रिस्क अगेन जो ऊपर मैंने बोला, तो उनका रिस्क बहुत ज़्यादा कम हो जाता है क्योंकि उनके पास एक प्रॉपर स्ट्रक्चर डॉक्यूमेंट होता है। परफॉर्मेंस अगेन उसका रिज़ल्ट है। अगर ऊपर की ये दो चीज़ें हो रही हैं, इंक्रीज इफ़िशियंसी एंड आइडेंटिफाइड
एंड मैनेज द रिस्क ऑफ वेंडर। अगर ये दो चीज़ें हो रही हैं तो थर्ड इज़ अगेन द रिजल्ट ऑफ द अबव टू ओनली। अगेन अगर बाकी सारी चीज़ें हो रही हैं, परफॉर्मेंस इंक्रीज़ हो रहा है, तो कॉस्ट भी घटेगा, ठीक है। और रिलेशनशिप भी एक हेल्दी रिलेशनशिप रहता है कस्टमर और वेंडर के बीच में। और अगेन ये सारी चीज़ें करके वेंडर का ब्रांड प्रोटेक्शन तो होता ही है, ठीक है। तो एक ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये तो हम लोगों ने भी डिस्कस कर लिया। अब प्रोसीजर क्या है, ड्राफ्टिंग कैसे करेंगे हम इसका। तो अ वेल इफ़िशिएंट लॉयर, एक अच्छे लॉयर जो हैं वो आपके लिए ड्राफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके ऑब्जेक्टिव क्लियर हैं तो लॉयर उसी हिसाब से आपको ड्राफ्ट करके दे देगा, ठीक है। और ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसमें, 3-4 दिन में बन जाता है। इज़ नॉट अ वेरी लेंदी डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो बोल रहे हैविंग अ वेल ड्राफ्टेड वेंडर अग्रीमेंट वुड स्पेल आउट द टर्म्स एंड कंडीशन इन अ गुड मैनर, ओके। तो इसमें लिखा हुआ है कि अगर अच्छे से ड्राफ्ट आपको करना है तो आपको कुछ कुछ चीज़ों को ध्यान में देने पड़ेगा। सबसे पहले यू मस्ट शो द डेट इन द फर्स्ट पेज ऑफ योर वेंडर अग्रीमेंट, और उसमें पार्टीज़ का एड्रेस, दोनों पार्टीज़ का एड्रेस आपको लिखने पड़ेगा, ठीक है। टू डेमोन्स्ट्रेट दैट योर ऑर्गेनाइजेशन इज़ लीगली परमिटेड टू सेल द आइटम एंड सर्विस engaged with the agreement, it is clear to clarify your vending license within the agreement. Next, you need to diagram each one of the expectation from the vendor before composing the real frame. It may include cost, tax, delivery, paying mode. Yes, so they have to demonstrate all of these things. And now the principal feature of the vendor agreement, it should cover the cost, service and product which they are selling, what will happen if something not goes as planned, all the date for final delivery, and what is the aim of a vendor agreement. Okay, everything should be written in a scratched. So you would prefer not to get scorched, nor do you wish a merchant to suffer during this procedure. An organization which is reasonable for its vendor get a strong notary, and everybody likes to make a deal with the owner that treat their supplier decently, correct. So is negotiation needed in a vendor agreement? So if in case you are negotiating with a familiar business partner, then it can also be closed and finalized with a simple handshake, but most likely written agreement is the highest quality level agreement, since account, guarantee, deposit and finances and much more are included. The way to get a vendor agreement finalized require a preparation, okay. So opposite side may ask for specific modulation as well as some concession. Evaluate and analyze, like they can ask for some changes. What are the key terms to include in a vendor agreement? What is the scope? What is the price? The termination and the breach. So scope, what is the scope? So scope will cover what services they are delivering or what good they are selling. So it will it might be written in the agreement that vendor would be supplying some form of raw material or product for your business. This would be stated in a vendor agreement. It has to be specified what the parties would carry out in the agreement, as this would avoid any form of complication, okay. So the scope of agreement would protect the vendor and the other party, all right. And then come the price. This form of agreement is a contract between the party. So if a principle of contract law would be applied to above, there has to be some form of consideration for the service or product provided. So the mode and method of pricing must be mentioned in the vendor agreement, okay. Then the termination clause, which will determine what are the circumstances in which the agreement can be terminated, all right. And then the breach, in instance of any breach of the provision related to the contract law would be operational. The type of breach must be mentioned.
what kind of breach are not allowed. So here it also has to be mentioned if the specific relief is considered by the parties in the contract or not. So if there is a breach of contract or an agreement, what would be the situation post breach? All of these instances has to be mentioned in the agreement. All right, so let's read some other article. I do some research, permutation, combination and writing in India in an IT service sector. All right, so that interview में अगर पूछते हैं तो you all guys will be able to answer it. Before that, I want to ask one question. Which provision of Indian Contract Act talk about like time is the essence of the contract? Which provisions? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. नहीं पता, बताती हूँ. Which provision of Indian Contract Act talk about the time as an essence of contract? All right. सेक्शन 55 क्या कहता है? सेक्शन 55 पहले पढ़ लेते हैं. चलो कैम का ही आर्टिकल पढ़ लेते हैं, इजीली समझ आ जाएगा. Time is the essence of the contract. Is it really? Okay. Negotiated as also standard format contract are the rife with the clauses proclaiming time is the essence. Parties are usually rest assured after spelling this out, hoping that such word employed would by themselves be adequate to enforce right through a court or an arbitral process. Supreme Court in Wellspun Specialty Solution Limited versus this has said that the principal basis which court are required to construe whether time is the essence, the court held that collective reading of entire contract and its surrounding circumstances is imperative to come to the conclusion. Merely having an explicit clause in a contract may not be sufficient to make time as an essence of the contract. The court also held that the availability of extension procedure to fulfill obligation under the contract along with consequent imposition of liquidated damages are good indicator to hold time is not the essence. So ये बोल रहा है, कोर्ट ने बोला कि अवेलेबिलिटी अगर है किसका, एक्सटेंशन प्रोसीजर का, टू फुलफिल obligation under the contract along with the consequent imposition of liquidated damages. अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है, ठीक है, और एक्सटेंशन का प्रोविज़न दिया हुआ है, प्रोसीजर दिया हुआ है कि आपको लिक्विडेटेड डैमेज के साथ देने पड़ेगा, इसका मतलब है टाइम इज़ नॉट द एसेंस, दे आर एक्सेप्टिंग इट. करेक्ट. अब फैक्चुअल बैकग्राउंड पढ़ते हैं कि while and natural gas corporation floated a global tender for purchase of steel casing pipes. ठीक है, ये appellant हैं, ठीक है. According purchase order were issued by the respondent. Was issued by the respondent to the appellant. Purchase order specifically stipulated that time and date of delivery were the essence of the PO. ठीक है. POs also provided the respondent the right to accept the delayed delivery without prejudice to right to recover. Okay. During the contract period, there were certain delay on the part of appellant and various extensions were granted by the respondent, expressly waiving the liquidated damages for first two extension and reducing the liquidated damage for remaining extension granted to appellant. Accordingly, the respondent deducted a sizable amount toward the liquidated damages from various bills. The arbitral tribunal, while rejecting the respondent claim for liquidated damages, held that time was not the essence of the contract and that liquidated damages therefore should not be granted. Aggrieved by the order,
a petition under section 34 before district court. The district court upheld the award, but with a modification in the cost of arbitration. It was challenged to the High Court of Uttarakhand. The High Court of Uttarakhand allowed the appeal filed by the respondent and dismissed the appeal filed by the appellant. Aggrieved by the High Court order, petition review was filed SLP against the order of the said review. Okay, so now read the court observation. Yes. So the court held that damages provided for under the term of PO could be read as a damage based on the actual tangible loss provable by the evidence instead of pre-estimated loss, as reasonably concluded by the arbitral tribunal relying on the second paragraph of section 55 of the Indian Contract Act. सेक्शन 55 क्या बोलता है? अलग से ही पढ़ने पड़ेगा. सेक्शन 55 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. ओके, गलत स्पेलिंग लिखी हूँ बट समझ जाओ. चलो इसी से पढ़ लेते हैं, इंडिया कोड से. वैसे तो इससे पढ़ना नहीं चाहिए बिकॉज इट इज़ नॉट रिलायबल, ऑल्सो इट इज़ नॉट ओपनिंग. यस, 55 करेक्ट. हाँ, effect of failure to perform at a fixed time in a contract in which time is essential. So when a party to a contract promise to do a certain thing at or before a specified time, or certain thing at or before a contract this one, or certain thing at or before a specified time and fail to do any such thing at or before the specified time, the contract or so much of it has not been performed become voidable at the option of promisee if the intention of parties was that time should be the essence of the contract. Effect of such failure when time is not essential. So if it was not the intention of the party that time should be the essence of the contract does not become voidable by the failure to do such thing at or before the specified time, but the promisee is entitled to compensation from the promiser for any loss happened to him by such failure. Effect of acceptance at the time other than as agreed upon. So if in the case of contract voidable on account of promiser failure to perform his promisee at the time agreed, the promisee accept the performance of such promise at any time other than agreed, the promisee cannot claim compensation for any loss that has happened by the non-performance of the promise at the time agreed, unless at the time of such acceptance he give notice to the promiser of his intention to do so. All right. So इसमें क्या कोर्ट ने कहा? अंडर सेक्शन 55 द इनोसेंट, नहीं ऊपर से था. Section 55 deal with the failure to perform a contract within the agreed time. In event the time is the essence, the failure to perform is voidable at the option of the promisee. In such case, the promisee is entitled to terminate the contract or claim damages from the breaching party that it has committed a fundamental breach of contract. However, instead of avoiding the contract, if the innocent party accepts the belated performance, it cannot claim the compensation for any loss that has happened to him. However, the second paragraph of section 55 provides for a situation where a party does not intend time to be the essence. In such cases, the contract is not voidable, but the innocent party will get the compensation. Okay, so in order to prove the claim for damages or a lawful or unlawful termination, it is necessary to first adjudicate upon whether the time is the essence or not. In the present case, the court has relied upon the Hind construction case, where it was held that whether or not the time is the essence is
essentially a question of the intention of the party to be gathered from the terms of the contract. In contract, providing for an explicit clause in this regard, such as stipulation, will have to be read along with the other provision of the contract, which may, upon construction, exclude any interference, that time being essence was fundamental. The court also observed that presence of clauses in a contract providing for extension of time in certain contingency or payment of fine penalty for delay may be cause to repel an argument that time was of essence or fundamental to the contract. In the event the contract provide for an extension of time, generally timely performance of contract may not be termed to be the fundamental then. In order to signify time as an essence, there must be specific and immovable date within which the extended performance of obligation has to be affected. Failing it may be held that party themselves by their conduct have waived the original terms of contract. All right. Okay, so it is not only from the explicit but surrounding of the contract should be must. चलो एक सिंपल सा लॉ भूमि से भी पढ़ लेते हैं टू अंडरस्टैंड इट easily. Time as an essence means that party have agreed within a specific time. If does not happen, the aggrieved party may choose to walk away or claim the damage. It is not enough to simply mention a date in a contract. The intention of both parties regarding the importance of timing must be clear. For some contract like selling of a perishable good or completing a business building before a monsoon, timing is naturally critical. For other like sale of land, court may presume that time is not that vital unless the contract says so or circumstance demand. How in IT the time is the essence? Okay. How in IT services time can be essence of an contract? So time meeting specific deadlines. If IT vendor misses a crucial date, it triggered a material giving client time sensitive rollout, rapid appreciation. Got it. Okay, so now we'll look at some agreement, like their opinion, the one who have drafted. So someone has said that after reviewing 30 plus SaaS contract last quarter, I have identified 50 most commonly overlooked provision that could save your business from a costly disaster. So okay, let's see what all are the disasters. So the average enterprises now uses 130 plus SaaS solution with critical business function entirely dependent on a third party software. ठीक है. So 67% of SaaS agreement lack the basic protection for service interruption. Okay, ठीक है. उनकी जो SaaS क्या होता है? SaaS is basically full form क्या होता है? Software as a service. Yes. So you are the vendor is selling their software, not selling, but giving access to their software to use that software. So the one of the basic thing that will come into the mind is that कि वो सॉफ्टवेयर नहीं अच्छे से चल रहा है, अगर बीच में डिस्ट्रप्शन हो रहा है, करेक्ट. तो सर्विस अगर डिस्ट्रप्शन हो रहा है तो उसके रिगार्डिंग क्या क्या प्रोटेक्शन है हमारे पास. ठीक है. फिर डेटा ब्रिचेस. तो मैं जो भी सॉफ्टवेयर जिस पर्पस के लिए यूज़ कर रही हूँ, लेट से उस सॉफ्टवेयर में मैंने अपने क्लाइंट के डिटेल्स रखे हुए हैं, और अगर वो लीक हो जा रहा है, यू आर सेलिंग दैट टू माई कॉम्पिटिटर, तो वो क्या हो रहा है, डाटा ब्रिच हो रहा है. तो उसके लिए क्या प्रोटेक्शन है. थर्ड, वेंडर एक्विजिशन और बैंकरप्सी. अगर जैसे मैंने तुमसे सॉफ्टवेयर लिया, कल को होके तुम बैंकरप्ट हो गया, ठीक है, कल को होके तुम्हारा एक्विजिशन हो गया,
तो फिर किसी और पार्टी के पास वो सॉफ्टवेयर का ओनरशिप आ जाएगा, तो फिर क्या क्या प्रोटेक्शन मुझे रहेगा? क्या मेरे सारे राइट्स जो पहले लिखे हुए थे वो हट जाएंगे, या कैसे चीज़ें मैनेज होंगी? तो वो एक इम्पॉर्टेंट है। और फिर एक अनऑथराइज डेटा यूजेस, बिना मेरे परमिशन के मेरा डेटा यूज़ नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अब इसका कॉस्ट क्या होता है अगर ये सारी चीज़ें हम नहीं देखते हैं, इन सारी चीज़ों को, सर्विस इंटरप्शन और ये 4 चीज़ों को, तो क्या होता है? कंपनी लूज एन एवरेज ऑफ $218,000 per SaaS related incidents. Okay, so this is very huge. So सर्विस लेवल अग्रीमेंट में क्या होना चाहिए? सर्विस लेवल अग्रीमेंट के टर्म्स क्या होना चाहिए? स्पेसिफिक अप टाइम कमिटमेंट, 99% इज नॉट एनफ, डिफाइन द मेजरमेंट पीरियड, एक्सक्लूजन फ्रॉम SLA कैलकुलेशन, प्लान मेंटेनेंस शुड बी कैप्ड, ठीक है। मीनिंगफुल कॉम्पनसेशन टाइड टू द इम्पैक्ट, नॉट द सिम्बॉलिक क्रेडिट, रिस्पॉन्स टाइम कमिटमेंट फॉर डिफरेंट severity levels, okay, escalation procedure with the named contract,